What's up, everyone? Today we are going to do a question called as merging two sorted arrays. So in this question, अपने को दो sorted arrays given हैं A1 and A2 and अगर सेम लेंथ के ना हो तब भी क्वेश्चन का अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा ऑफ इक्वल और अनइक्वल लेंथ दोनों के अंदर ही वही काम करना है. लेट्स से दिस लेंथ इज m and n. what we want to return is कि हमारे पास आंसर एक एरे हो m plus n साइज का और उसके अंदर इसमें जो एलिमेंट्स हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हैं दीज आर बोथ सॉर्टेड. सो एक सॉर्टेड एरे बने जिसके अंदर इन सबके सारे एलिमेंट्स हो. तो इफ इट इज 1 7 8 10 12 and this is 2 4 8. so what we want is 1 2 4 7 8 8 10 and 12. So all these elements we want in our array. So how do we do this question, right? This is what we want to do, but how do we solve this? Let's see. So if I am given एक मेरे को A1 array given है A1 and we are given another array A2. इसका size है M और इसका size है N. तो firstly what we want to make is एक और array जिसका नाम मैं A3 दे रहा हूँ के लिए of m plus n size. ठीक है, अभी इसके अंदर जीरो हो सकता है, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू से कुछ भी हो सकता है, वी डोंट रियली केयर, बट वी वांट टू फिल दिस नाउ. तो हम इसके अंदर वैल्यूज को कैसे फिल करना शुरू कर सकते हैं? व्हाट वी वांट टू से इज कि ठीक है यार, स्टार्टिंग में कैसी वैल्यू आएगी, जो सबसे छोटी है वो वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू आएगी, राइट? ऐसे करके बढ़ेगा. तो हाउ डू वी सी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? विल फर्स्ट कंपेयर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. This is the first value. Let's say this is 2 4 8 10 13 15 and we have, let's say, 3 7 9. These are the values that we have. So what we want to do over here is first compare these first values. अब इनमें से जो छोटा है 2 है तो 2 को डाल देंगे यहाँ पे, right? This is done. Now we want to compare next value in this array but the similar value over here. इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, 3 को डाल दिया. मूविंग टू ओवर हियर, इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 4 और 7 में से 4 छोटा है. मूविंग अहेड, 8 और 7 में से 7 छोटा है. 7 और 10 में से हमारे पास सॉरी 8 है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ 9 मूव ऑन करें. 8 और 9 के अंदर से 8 छोटा है, राइट? एंड दैट्स इट. यहाँ पे 9 आ चुका है, 9 और 10 में जब कंपेयर करेंगे और 9 मूव्स टू है, मतलब कोई एलिमेंट हमारे पास array 2 के अंदर नहीं बचा इस टाइम पे. नाउ व्हाट वी वांट टू सी इज कि अब इसमें एलिमेंट नहीं बचा, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स A1 में बच गए हैं, all these elements are greater than A2. So we'll just copy them. Make sense? तो in short what the whole algorithm is saying कि हमारे पास एक A1 गिवन होगा, एक A2 गिवन होगा. आपको इनमें से दो पॉइंटर रखने हैं. लेट्स कॉल देम P1 एंड P2 एट देयर स्टार्टिंग एंड we'll keep one pointer for A3 called as P3 which is telling कहाँ पे हम इस एरे के अंदर हम वैल्यूज भरेंगे. ठीक है, जब तक P1 और P2 में कंपैरिजन हो सकता है, जब तक उनमें से कोई पॉइंटर जो है लास्ट में नहीं पहुंच जाता, तब तक हम सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कराते रहेंगे और जो जो छोटे छोटे वैल्यूज हैं उनको हम इसमें भरते रहेंगे. At any given point of time, compare the value from A1 and A2, whichever is smaller, copy that value at position P3. Move this pointer, let's say it was from A1, तो जो भी छोटी वैल्यू थी उसका पॉइंटर मूव कर दिया आगे हमने, दूसरा पॉइंटर वहीं रहेगा और P3 को आगे मूव कर दिया. तो P1 is telling me which value I am considering from array 1. P2 is telling me which value I am considering from array 2. And P3 is telling me whatever value you consider and compare, where do you copy it in array 3? So this is what we are comparing. After some time, one of these arrays will take the lead. तो हो सकता है कि P2 at the end तक पहुंच चुका है and P1 is still stuck at this point and there are some elements left after this. So we'll just copy all of these elements at the end of this array. So जितने भी ये एलिमेंट्स थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स A1 के बाकी सारे एलिमेंट्स से भी बड़े थे,
A2 से भी बड़े थे, तभी ये कंपेयर होते होते लास्ट में बच गए, तो उनको हम लास्ट में जोड़. फॉर एग्जाम्पल, let's take one more example and then we'll move. Let's do this example with the code itself. So this code is a pseudo code, or you can say a Python code, and we'll understand by step कि हम कैसे कर रहे हैं. What we are given is nums1 of size m and nums2 of size n. So let me take an example. Nums1 can be 2, 5, 8, 10, 20, 21. And so the size is m. तो m कितना हो गया हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we have the other array nums2 is equal to, let's say, um, 4, 6, 8, 10. These are the elements in nums2. And इसका size है n, जो कि है 1, 2, 3, 4. ये सब कुछ हमें इनपुट में गिवन है. दिस फंक्शन मर्ज, इसके अंदर इनपुट में ये सब गिवन. ठीक है, just don't get confused with this self keyword over here. This is just a normal function. Okay. So now what we want to do is we will follow this and see how it goes. ठीक है. So first step is we are making our answer array of size m plus n. उसके अंदर हम सारे zeros डाल रहे हैं. तो 10 size का हमें एक array बनाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. What we want to do now is initialize 3 pointers p1, p2, p3 as 0, 0, 0. So p1 is going to tell at what element are we in n1. P2 is going to tell me at what element I am in n2, and P3 is going to tell me at what empty space we are in answer array. So we are done. 0, 0, 0. We have initialized. What do we want to see? Now we are running a loop till P1 is less than n and P2 is less than n. Basically, when they'll increment, we want to run this loop till both of these array have some values. So that means P1 would be less than m, which is the size of this array, and P2 will be less than n, size of nums2. Right? So first, we'll compare nums1 का जो P1 element है with nums2 का P2 element. Okay? We compare this with this. Whatever is the smaller value, if it is nums1, which is the smaller value, we'll copy nums1's value into answer. If it is the nums2 value which is smaller, we'll copy that value into answer. Okay? And we'll keep on doing that. Whatever is the smaller value, we'll move the pointer for that +1, and in both the cases P3 moves, because P3 is just telling you which is the empty space. Whenever you copy any element into P3, you have to move that as well. So in this case, 2 chota hai, 2 will come and override over here. So 2 will come and right just above this. 2 comes here, P3 moves ahead and P1 moves ahead. P1 P2 का हमने फिर से कंपेयर कराया 4 and 5 को. तो 4 छोटा है तो यहाँ पे 4 आ गया and P2 मूव आगे कर गया. ठीक है, and P3 मूव कर गया. Now comparing 5 and 6. When we compare 5 and 6, 5 छोटा है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, right? And P3 आगे मूव कर गया, P1 भी आगे मूव कर गया. Comparing 6 and 8, 6 छोटा है, 6 को यहाँ डालेंगे, P2 को आगे मूव कराएंगे and P3 को भी आगे मूव कराएंगे. Comparing 8 and 8, both equal. We can, in this case, we can move any one of them, but if you are following this, it will move P2. So if we move P2 and copy this, we copy this 8 over here, move P3 to here and P2 to the next location because we copied this element. So now when we see these two numbers, this 8 is smaller, so this will get over here. अगर हम इसको पहले बढ़ा देते तो भी सही नहीं काम. तो अब ये वाला 8 आगे बढ़ा. We move P3 to this location, P1 to this location, 10 and 10 again. So we copy this number. So 10 comes over here and P3 goes here and P2 goes over here. P2 now is not less than n, which is the size of n2. So this loop, this whole loop is done now.
but there will be some elements left in this array. So it can be कि हमारे n1 में elements पड़े हों या फिर ये भी हो सकता है कि n2 में elements पड़े हों, depending upon कि compare कराते कराते किस में elements बच गए. तो it can be one of these. So we have written two components in our code, component A and B, out of which always only one of them will work. तो अगर P1 में एलिमेंट्स बचे हैं तो ये वाला काम करेगा, अगर P2 में एलिमेंट्स बचे हैं तो ये वाला काम करेगा. दोनों क्यों नहीं काम करेंगे? कि दोनों में तो अगर दोनों ही छोटे होते, P1 और P2 दोनों ही M और N से छोटे होते, तो यही वाला लूप चल रहा होता. When this loop ends, one of these value was incremented and either P1 became M or P2 became N. So now when we say that, okay, maybe let's say कि P1 was still less than M and P2 became M. So this will not move. So this code will not be executed, but this will be executed. इस code में हम क्या कर रहे हैं? इसमें कह रहे हैं, अब देखो N1 के अंदर जो जो elements बचे हैं उनको यहाँ पे डाल, right? So N1 के अंदर P1 यहाँ पे है इस टाइम पे, तो ये सारे elements यहाँ पे हम कॉपी करा दें, right? You can see आंसर 3 के अंदर P1 की वैल्यू डालो, P1 को इंक्रीमेंट करो, P3 को इंक्रीमेंट करो, 20 यहाँ पे डालो फिर से एंड 21 को यहाँ पे डालो. जब ये काम हो जाएगा तो we move to this part and we see while P2 less than N, but in our case P2 was already equal to N when we exited this code. One of these conditions would be false when we exited this part of code, right? So one of these loops will run only. So in this case, if the input is like this, P2 is already equal to N. It is not less than N. So this whole code will not run and we'll return this whole answer at. So this is the whole solution, and the time complexity for this is O of M plus N, linear time complexity. And the space complexity is, we use another answer array for this, so that is also equal to O of M plus N. That's it. This is the solution for this question. And if you like this video, you can just like and share it with your friends. If you have any questions, if you have any suggestions, anything, just put it up in the comments. We'll be posting regular videos for questions in DSA and other subjects in this channel. Thank you everyone. Bye-bye.